Hi, sir. Yeah, man, let's start. Yes. So there was homework. We won't be Yeah. able to get. I was unwell, so मेरी की भी तबीयत खराब हो गई कल. In the evening at 5:30, I just laid down for a while. I had a class at 6 and I woke up at 7:15. And then after that, I had high fever. So everything got cancelled after that. And that one as well. So yeah, nowadays, be careful, man. It's weird time health-wise. Okay, तो अभी कर लेते हैं. कितना हमने किया था और कितना हमारा रह गया है. ये हमने बोट वाला कर लिया. 7, 8, 9, and 10, and investigation is remaining. Let's do them first and then we'll move forward. yes, sir. So would we? ये क्या पटाखे क्या बज रहे हैं पीछे? So did we manage to do question 5? I think 5 हाँ किया था ना. 5 कर लिया. जूलियट और रोमियो वाला. कुछ आपको डाउट आए तो थे, but I think it was cleared up, isn't it? We were on question 6. Yeah. 6 भी कर लिया था. आप दोबारा देख लो जरूरत पड़े तो. ये डायग्राम बनाया हुआ है. फिर से देख लो आप. कोई नहीं. Boat travels on a bearing of boat travels on a bearing. No. ये पटाखे क्या बज रहे हैं? किसकी पिटाई हो रही है पीछे? So there's mosquitoes मार रही है. अच्छा, mosquitoes. Sorry, but there are like 100 mosquitoes in his room. I would recommend not letting mosquitoes come in हाँ. Delhi, especially. Delhi is very dangerous. Yeah. And then all out is a better option. All out है पर फिर भी आ रहे हैं. ठीक है. दिल्ली का I'm मच्छर. just trying to get rid of him for him. चलो मैं आपके लिए एक फ्री सर्विस. yes. Carry on, give me a minute. Yes, sir. Six. No. Bearing of north for 25 degrees. For 25 kilometers. 20. So could you go up a little bit? It has A part, and B.
Yeah, sorry, my food had come, so I just went to collect it. Okay. No problem, sir. Sir, could you just go a little up above question 7, the A part and B part for this question? Yes. Yeah. How many miles? 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 No. So just give me a minute, please. Sure, sure. How many miles north? So 36.5. 10. क्या Opposite तुम्हारे घर के आ रहे पूरी फैमिली आ रही है cos theta is equal to cos theta is equal to h right. So cos 36 486 12.56 miles and how many miles west have been both traveled tan equal to opposite is it right? Right. 1,635,632. 11.28. So for A part, I'm getting 12.56 and for B part, I'm getting 11.28, both in miles. Right. How much is the answer again? For A part, it is 12.56 and for B part, it is 11.28. अच्छा, miles में कैसे आ रहा है फिर? Sir, वो miles में पूछा है इन्होंने. अच्छा, how many miles? ठीक है, ठीक है. तो पहले तो किलोमीटर में आएगा. 25 is the total distance, and then what's this? 81.52. 40 degree. नहीं, ये कुछ अलग है. ये क्वेश्चन अलग है. Okay, cool. So I'll have to calculate this.
on a bearing of north 36 degree west. यानी कि I'm somewhere from there, from the north and 36 degree west, which is this. So 36 degrees from here, and I'm traveling how much? 25 kilometers. So they have asked for two things: north kitni chali or west kitni chali. So I'm gonna call them N and W. So N is equal to 25 cos 36. 25 cos 36 gives me 20.22 divided by 1.6, 12.64 miles. पहले वाला कितना है आपका? 12.64 मेरा 12.56 आया सर। अच्छा, आपने माइल्स का एग्जैक्ट यूज किया होगा। हाँ। कितना है माइल का आपका रेशियो? सर 1 to 0.621 1 kilometer is 0.621 ठीक है। miles. तो मैंने एक्चुअली 1.6 से डिवाइड कर दिया, तो इसीलिए थोड़ा सा वेरिएबल है, बट ठीक है। और दूसरे वाला 9.18। So could you show your working for the B part, sir? B part theory. So this is my boat travel total 25 kilometers, and then this part is I'm calling W, this one I'm calling N, इसको X बोल रहा हूँ, तो N by 25 is cos 36 degrees, Yeah. and W by 25 is equal to sine 36 degrees, I guess. Yeah. क्यों एक्चुअली इसमें क्या है ना, ये जो डिस्टेंस है in this triangle, that is the same as this distance. Are you following what I'm saying? Yes, sir. इसीलिए वो वाली साइड आप निकाल लो तो वो भी इसी के बराबर है। Understood. Excuse me. Question 7. Boat is due and sailing on a bearing due west. South and west. West. On a bearing of south 11112 bearing 51 until it is so hypotenuse opposite sine 112 equals um,
So my answer is coming out to be 55.01 for 7. इसमें उल्टा दिया हुआ है, तो लेट्स सी. Is due south of a lighthouse and sails on a bearing of 292 degrees for 51 kilometers until it is due west of the lighthouse. How far away is it from the lighthouse now? अच्छा, तो मतलब ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है. ये मान लो आपकी लोकेशन, ये लाइट हाउस है ओ, और बोट इधर है. ड्यू साउथ मतलब साउथ में है बिल्कुल, हाँ. तो कहीं भी हो सकती है, पता नहीं कितनी दूर है. और सेल्स ऑन अ बेयरिंग ऑफ 292 डिग्रीज. 292 डिग्रीज मतलब -8 डिग्री. अंटिल इट इज ड्यू वेस्ट. ड्यू वेस्ट कैसे हो सकती है? 290, सॉरी 8 डिग्रीज बोल रहा हूँ. 68 डिग्रीज. 68 डिग्रीज, वो भी नेगेटिव. तो वो तो ये आना चाहिए वैसे, जैसे हमने बात करी उस हिसाब से. तो बट अगर ये साउथ, दे आर कंपेयरिंग इट विद साउथ और नॉट साउथ, ये इसका 290 डिग्रीज जाऊंगा तो दैट विल आल्सो बी हियर. आंसर तो एक ही आ सकता है इसमें, मतलब डायरेक्शन तो एक ही हो सकती है. इट हैज टू बी, बिकॉज इट हैज टू बी ड्यू वेस्ट. अच्छा, करेक्ट, वेस्ट लेफ्ट में. सही है, दैट मेक्स सेंस. सो ऐसे जाएगी, देन इट विल बी ड्यू वेस्ट. तो ये फॉर 51 किलोमीटर, तो ये 51 है, ये जो पूरी डिस्टेंस है किलोमीटर. और बोल रहा हाउ फार इट इज फ्रॉम द लाइट हाउस नाउ, तो इसकी बात हो रही है एक्स. और एंगल जो है 292 डिग्री मतलब -70 68 भी बोल सकते हैं उसको, या फिर आप पूरा घुमा लो, एक ही बात. तो पूरा घुमाएंगे तो ये आ गया 292 डिग्री क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल लो 72 डिग्री, 68 डिग्री. 68 डिग्री. अब करो कैलकुलेट. x by 51 is sin 68. तो x is equal to 51 sin 68. 51 sin 68 मेरा आएगा 47.29 किलोमीटर. कितना आप? Sir, 51. Sir, 51 opposite side नहीं होगा? Or how तो does it become the ये तो hypotenuse? ये तो 90 डिग्री है, हाँ. तो ये हाइपोटेन्यूज ही होगा फिर. हाँ. There is no other ठीक है, possible. वो मैंने साइन गड़बड़ कर what दी. I did was sin 112, but I think that's wrong. Sin 112 कैसे लिया आपने एंगल? सर वो 292 को 180 से माइनस करके, क्योंकि वो ऐसे मत करो ना, जो मैं पहले कंफ्यूज क्यों हो रहा था, बिकॉज आई वाज लाइक वेस्ट राइट में सोच रहा था मैं, वेस्ट बंगाल की वजह से, बट वेस्ट लेफ्ट में है. तो नाउ इट मेक्स परफेक्ट सेंस एज वी हैव स्टडीड कि आपको क्लॉकवाइज जाना है 292 डिग्रीज. इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज आप कितना जाओगे? 360 डिग्रीज है ना टोटल. तो 360 माइनस 68 विल गिव यू 292. तो that's why this angle is 68 degrees, and accordingly you solve. understood. Sin and then 47.2. Okay, yes sir. Understood.
Molly looks out of his office window. 300 meters away. The angle of elevation of the top 23. The angle of depression 30. 30. How tall is the apartment block? Ah, 300 tan theta. Opposite. So x. Tan 20. Plus a tan 30. Hmm. गलती हो गई tan 30. Tan 23. Plus tan 30. So just give me 1 minute. My calculation, just 1 minute. Okay. Uh, So my answer is coming out to be 300.54. 55. 300.55. How much you getting?
300.55, sir. Okay, let me see. So, wait, are we doing 8th question now? Yes. Okay. Wally looks out of his office. Angle of elevation to the top of the building is 23 degrees. So Wally is looking, see the top and bottom of an apartment block, which is itself 300 meters away. So angle of elevation to the top of the office building is 23 degrees. Office नहीं को ये थोड़ा सा है language में issue आ रहा है इनके. They're talking about apartment building, then there's an office. So either I'm misinterpreting. Oh. हाँ थोड़ा सा मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि यही होगा कि मतलब obviously this is what it's gonna be. I think Yeah, there's a that's what I was thinking. yeah और तो क्या ही देख लेते हैं कोई ट्विस्ट तो नहीं है इसमें. ये 23 डिग्री है. ये 30 डिग्री है. How tall is the apartment block? तो फिर एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा. इसको बोलो h, इसको बोलो d, h plus d या a भी बोल दो जो भी. a plus b is the total height of the ये जो ये 300 मीटर. तो a will be a by 300 is tan 23. So a will be 300 tan 23. Or b will be b क्या है b by 300 तो 300 tan 30 हो जाएगा. तो कितनी वैल्यू आई है और b की 300 tan 23 tan 23 127.34. Yeah. और 300 tan 30 173.20. तो टोटल कितना आ गया 300.5. आपका क्या आया 300. Oh, 300 point. Yes. सही है. But so then why does it say from the top of the office building? Or is that to confuse? वही मैं समझने की कोशिश कर रहा था. मैंने सोचा पहले सॉल्व ही कर लूं बट लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू से. सी द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन अपार्टमेंट ब्लॉक. तो अपार्टमेंट ब्लॉक का मतलब तो अपार्टमेंट ही हुआ ब्लॉक टू. फिर एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग. तो यार हाँ तो इन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन टू द ऑफिस तो उसका खुद का है जहां वो बैठा है. अगर देखा जाए तो दिस इज माय ऑफिस. इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से आई मीन खुद से देखेगा तो 90 डिग्री और अगर यहाँ से देखो तो फिर कुछ और आंसर आएगा. तो आई डोंट थिंक दैट्स मोस्टली अ टाइपो. अदरवाइज तो कैसे डुएबल होएगा फिर ये. हमें कोई ऑफिस की हाइट थोड़ी ना निकालनी है. Freezing pretty weird too. या I'll just start question 9. ये राइट. Here it's standing on the viewing deck of Elephant 300. Okay. So distance from lane to lane. 40 plus 32, 90 minus 1, 18. तो एक हो गई 18.
18, 300. 10, 18. Plus 32, 50. 10, 50 equals x upon 300. Minus. So my answer is 260 meters. 260.1 meters. Let's check. Pier. क्या कर रहा Pier? Standing on the viewing deck of the Eiffel Tower, 300 meter above the ground. ठीक है. He looks down at an angle of depression of 40 degree. वहाँ पे उसे Elaine दिखी. और at point A, he looks down further 32 degree. वहाँ पे उसे Bailey दिखी. At point B, what is the distance from Elaine to Bailey? गड़बड़ लग रही है इधर मेरे को. तो 300 Elaine और Bailey हमें क्या निकालना है? This distance is what we're interested in. So we can go ahead and find this distance. You can call it distance A. You can go ahead and find this distance. You can call it distance B, and you are going to find A minus B essentially. तो A की वैल्यू क्या है? ओके, एंगल मुझे मिला ही हुआ है, 40 डिग्री है, तो मैं बोलूँगा A क्या है? A is the. नमस्ते बेटा, कैसे हो? तो A by A minus B is their difference. क्या? मैं आ रहा हूँ 20 मिनट में, 15-20 मिनट में. तो A by 300 जो है, that is my tan 40, right? So A is equal to, sorry, सही बोला मैंने, cot बोल दिया मैंने शायद, I think. मैं दोबारा देखता हूँ इस ट्रायंगल को एक बार अच्छे से. 300 by A is tan 40. So A by 300 is cot 40. So A is 300 cot 40. And B is 300. B is 300 cot 32, I guess, if I'm not wrong. तो फिर आपको क्या करना है? बेसिकली A minus B करना है. तो जल्दी से निकाल लेते हैं इसको. 300 cot 40. सही यार, cot कैलकुलेटर में है ही नहीं. मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, मतलब कह रहे हैं खुद दिमाग लगाओ 1 by वो करके. चलो कोई नहीं, tan 40 निकाल लेते हैं. tan 40 is equal to 0.83 और उसको 1 by दिस करना है ना. है क्या ऐसा ऑप्शन? हाँ है. तो 1.19. तो ये A आ गया 300 into 1.19 और B क्या आ रहा है? B is basically, I'm interested in B है 300 cot 32. So I'm looking at tan 32 and then I'm doing inverse of that. So that's 1.6. 300 into 1.6 is what I'm looking at. मेरे को पहले भी इस पे गलत फीलिंग आ रही थी because yeah, there is something. Why did I do that? 300, wait, A by 300 is cot 40 only, right? Yeah. Oh, I'm so sorry. नहीं, सही तो है.
अच्छा, this is 72 actually. ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया. 32 plus 40 है ना, 72 है टोटल एंगल, उसको ध्यान से देखना है. तो ये एक्चुअली 40 वाला सही है, ये 72 आएगा. पहले लग रहा था मुझे कि कॉट की वैल्यू तो कम होनी चाहिए, बढ़ेगी कैसे. तो फिर कर लेते हैं एक बार, कॉट tan 72 निकाल लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं. 0.32, तो ये इधर किधर आएगा 0.32 इधर. तो ये क्या आ गया 0.32. अब मुझे कुछ नहीं करना. 1.19 माइनस 0.32 इंटू 300, 261 मीटर आ रहा है आई थिंक. आपका कितना है? सर 26, हाँ सर मेरा 260.1 आया. कोई नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा सा चलता है, बट तरीका आप समझ गए ना. हाँ सर. So इसमें what I did was I added 40 plus 32. When I 90 minus 72, I got 18. 90 minus 72. अच्छा, Yeah. यू मीन दिस एंगल. हाँ, ये भी कर सकते हो, हाँ. इसमें कोई बुराई नहीं. ये 18 डिग्री है. तो फिर वो आपने एक, बी, हाँ फिर आपने हाँ वो तो लगा फिर दिया B to 300 by b is tan 80. B to C I found, then हाँ. A to C, and then I just minus. वो भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है. ओके, लेट्स मूव ऑन. इसमें थोड़ा दिमाग to खर्च करना पड़ा. question 10. When you stand in the edge of at its deepest point and look forward, you need to well, depreciation 75. Sir, I don't quite understand this one. कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या बोल रहा फिर. You stand at the edge of the Grand Canyon at its deepest point and look horizontally across the canyon is 498 meter wide. So at the bottom of the canyon, you have the width of 498 meters. This is the width at the bottom. फिर क्या बोल रहा है? You need to move your eyes through an angle of depression. अच्छा. When you stand at the edge of the Grand Canyon at its deepest point and look horizontally across, the canyon is acha. To look down to the bottom of the canyon from the cliff edge above, you need to move your eyes through an angle of depression of 75 degrees. Basically, they are saying that this angle of depression should be 75 degrees. When your eyes are 1.5 meter above the cliff edge. तो ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये हाइट प्लस मेरी आईज की हाइट, height of canyon plus height of my eyes,
How deep is the Grand Canyon at Yeah. this point? हाँ, answer to the nearest meter. तो मतलब वही 1.5 से थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही. तो ये बेसिकली h plus 1.5 h पूछ रहा है बेसिकली. ठीक है, तो हमें पहले इसको ऐसे ही करना पड़ेगा आई थिंक. तो 490 क्या है ये h plus 1.5 है. तो ये क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस. तो मेरा आ जाएगा tan 75 इज इक्वल टू h plus 1.5 by 498 is what I'm looking at. तो इससे 498 into tan 75 1858.56 minus 1.5 just to be safe. Excuse me. That will give me h is equal to 1857 if I'm not made a calculation error. आपको समझ आया आपको मतलब? देख लो. So why do we use tan 75? Won't it become tan 15? tan 15 Yeah. नहीं देखो 90 minus ये 75. 70 नहीं कोई नहीं, मैंने सिर्फ ये एंगल लिया है और फिर इसको मैं हाँ. h plus 1.5 Okay. ट्रीट कर रहा हूँ पहले की तरह. आप वही कर रहे हो जो आप पहले कर रहे थे. आपने इधर 15 डिग्री कर लिया तो कोई चेंज नहीं होना चाहता तो आप कर लो ऐसे. हाँ. फिर उसमें वो कॉट हो जाएगा Cot, okay. क्योंकि वो बेस बन जाएगा, वो परपेंडिकुलर बन जाएगा. ठीक है ना? मैं तो जल्दी आ गया बच्चा, क्या बात. कोई नहीं, आने दो टाइम तो. ऑलराइट, ओके लास्ट क्वेश्चन करते हैं. जी सर. Investigation. So what is the last question? सॉरी, इन्वेस्टिगेशन. यूज टेक्नोलॉजी टू कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल. काय की टेक्नोलॉजी भाई? कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर यूज करना रहता है. sin 30 cos 60 cos 30 sin 60. तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है. कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में. So what is the homework for Yeah, Thursday? that's what I'm looking at actually. Already opened the book. देख ही लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं ड्राइव में जाके. ड्राइव.
एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैं बता देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन दे दूंगा। जी सर। और उसके बाद तो कुछ अलग ही है, तो अभी उसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है? बाकी दिस बता इज फॉर नॉन राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं इसमें हम बना देते हैं। अभी मैं डाल के दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, एक क्वेश्चन बता दूंगा तो आपको पूरा ही आ जाएगा, ठीक है? जी। तो इसमें इसमें हम लोग बना देते हैं ऑल्टीट्यूड जो होता है ना, इधर देखो आप, जैसे ए बी सर, ओके। ये आपने एबीसी ट्रायंगल दे दिया आपको, हाँ और फिर आप क्या करोगे, यू विल ड्रॉप दी परपेंडिकुलर हाँ आर्टिफिशियली, यू विल क्रिएट दैट। और फिर आप एच की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो ट्रिग्नोमेट्री से अगर आपको लेफ्ट या राइट कोई एंगल दिया होगा और कोई भी साइड दी होगी, ठीक है? बेस की तो नहीं कर सकते कुछ, बेस पे हमें क्या पता कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है या कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें ए या सी दी होगी और एंगल ए या सी दिया होगा, एंड यूजिंग दैट इन्फो वी कैन इजीली फाइंड एच, और फिर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो है ही, समझ गए? बाकी मैं हाँ आपको एक सर, आप क्वेश्चन भी इस, हाँ करके दिखा देता हूँ, क्या कह रहे हो? हाँ यस, मैं करके दिखा देता हूँ, और जी। एक आपको ये क्वेश्चंस भी। हाँ सर। आपका वन नोट सही चल रहा है? सर वो वन नोट बहुत टाइम लगाते हैं लोड होने में। लोड होने में बहुत मतलब कितना? क्योंकि मुझे कंप्लेंट्स आ सर चुकी लाइक हैं वन नोट के समटाइम्स इट रिगार्डिंग। लाइक टेक्स हाफ एन आवर और समथिंग। ओ माय गॉड, दैट्स पैथेटिक। तो उसके लिए मैंने एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ये निकाला है कि जी। मैं सबको पीडीएफ मैसेज करे जा रहा हूँ, मतलब हाँ ईमेल कर रहा हूँ, आपको भी कर देता हूँ। और हाँ सर, परमानेंट दैट बी सॉल्यूशन ये है कि ग्रेट। मैंने देखा कि मेरी जो वन ड्राइव की स्टोरेज है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वन ड्राइव स्टोरेज तो अभी बहुत बची हुई है, लाइक 4-5 GB में से हार्डली कुछ सर यूज हुआ, आधा भी यूज नहीं हुआ। तो आई कांट हेल्प बाय बाइंग मोर स्टोरेज, तो मुझे पता नहीं है, तो आई एम ट्रू सर। थिंकिंग। सो could you go to share once maybe क्या like शेयर? uh, uh, हाँ, वो तो मैं आपको सेंड अ कॉपी ऑफ दिस पेज करूंगा, कॉपी लिंक टू नोटबुक तो मैंने किया ही हुआ है। हाँ तो सर, इधर माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ इज इन ट्रू। ट्रबल और समथिंग। प्रीमियम अकाउंट लेने का मतलब बहुत ही सस्ता है, लाइक 100 रुपीज पर मंथ और सो, तो मैं वैसे करके देख लेता हूँ, क्या पता इफ आई बाय देयर स्टोरेज सर दे माइट सर्विस मी बेटर, यू नो, no sir, इट्स that is वर्थ not ट्राइंग। required. So वो because नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चलना चाहिए ना, बच्चों को दिक्कत हाँ आ रही है तो, समझ रहा नहीं हूँ। मतलब जब लोड हो जाते हैं तो फिर अच्छे से चलता है, पर वो काफी टाइम लगाता है लोड फिर होने में। हाफ एन आवर, कोई हाफ मिनट भी ज्यादा है इस चीज के लिए, तो आजकल कहाँ वेट करता भाई कोई हाँ लोडिंग में। मैं खुद ना बैठूं, मान लो मेरे को क्लास स्टार्ट करनी है, मुझे पढ़ना है, मैं आधा घंटा थोड़ी ना वेट करूंगा कि लोडिंग हो ये। रही है, दैट्स पैथेटिक। तो basically anyway, what I'm saying is, let me just tell you about this and then I'll share with you this anyway, यस ठीक है? Send copy of the page, send with another app, and then I can't send directly via WhatsApp, so I'll be sending you on Gmail. You सर, have to I'll give me just your give you email my ID. जी Yeah. yes, so it's that Mayank Magnus here. हाँ बोलो, Mayank Mayank Madness. yes, Magnus. Magnus, Yes, Magnus. sir. Wow. Nothing फिर आगे? capitals. Even the Mayanka M is. वो मैटर नहीं करता वैसे, Oh, इट्स okay. नॉट अ पासवर्ड, Okay. बट कोई नहीं। मयंक मैग्नस @gmail, इज इट? Yes, sir. चलो, नाम तो बढ़िया है तुम्हारा, ईमेल वाला, ठीक है चलो। तो आई एम सेंडिंग यू दिस, ये आपको अनटाइटल्ड पेज आप डाउनलोड करके फिर जो भी जी करना है सर। करो। तो अभी ये जुगाड़ है, लेकिन ऑफ कोर्स आई डोंट वांट दिस सिचुएशन टू परसिस्ट फॉर लॉन्ग, तो या तो मैं ऐप ही स्विच कर दूंगा इफ दे डोंट क्लैरिफाई दिस, रेक्टिफाई दिस। मैं 1 मंथ की प्रीमियम मेंबरशिप लेके देख रहा हूँ इफ दैट हेल्प्स एट ऑल, क्योंकि ना Yeah. मेरा आईपैड फुल है, ना मेरा क्लाउड स्टोरेज फुल है, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट, तो देयर इज नो रियल रीजन फॉर दिस टू हैपन अनलेस दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी इशू True. व्हिच दे विल सॉर्ट आउट। तो 3 बार तो बच्चों ने शिकायत कर दी मेरे को पिछले 2 दिन में, इसलिए मैंने पूछा। तो आई विल मूव टू सम अदर प्लेटफॉर्म वेरी सून इफ दिस डजंट वर्क, ओके? सो गिव Understood. मी अ डे और टू टू सॉर्ट दिस। चलो मयंक, फिर मैग्नस, अगली बार मिलते हैं। ठीक। बाय बाय। Bye, sir. Thank you. Bye bye. You're welcome. Yeah.